Let's begin the topic difference between degree and order passed by the court. This topic is for everyone to know what does it mean by the court when it says the degree has been passed and what does it mean when they say the order has been passed by the court. Before I begin, let me tell you that the lectures on JLO classes are adopting a technique which not just explains a given topic of a subject but also helps the student, guiding them how to attempt a topic in a law examination or a competition. So now let's begin with the differences between degree and order. और सबसे पहले इसको define करने से पहले when you attempt an examination, पहला point definition होगी. Degree is covered in subsection 2 of section 2 and order is covered in subsection 14 of section 2. डिग्री को एक्सप्लेन कर दें एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी. डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which so far as regard to the courts expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144 but shall not include two things. One, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order and any order of dismissible for default. हमने सीपीसी के फर्स्ट पार्ट में सारी डेफिनेशंस कवर की थी. अगर आपने याद कर ली होंगी तो आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना बहुत इजी लगेगा. कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द डिग्री, अगर आप भूल जाते हैं कि सब सेक्शन 2 और सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी 1908 में डिग्री को क्या डिफाइन किया गया था, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर याद रखना कि इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and it may either be preliminary or final. So differences cover करते समय अब हम orders की definition को दे देंगे. Subsection 14 of section 2 order says the formal expression of any decision of a civil court which is not a degree. Origin, second point. डिग्री क्या कहता है? अ डिग्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट विच कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. मतलब आपने कंप्लेंट एप्लीकेशन या सूट फाइल किया है, उसके ऊपर ही डिग्री पास होगी. ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री एंड ऑर्डर इन this regard is that order may originate from a suit by presentation of a plaint. ठीक है, यहां तक तो डिग्री ने भी यही कहा था, लेकिन आगे ये आ जाता है और मे अराइज फ्रॉम प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड बाय अ पिटिशन और एन एप्लीकेशंस. मीन्स टू थिंग्स आर देयर. ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट द प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड और उसमें ऑर्डर दिया जा सकता है, और बाय एन एप्लीकेशन व्हेन द प्रोसीडिंग इज बीइंग अंडर प्रोसेस. नंबर 3 इज राइट्स ऑफ पार्टीज. डिग्री में क्या आता है? अ डिग्री इज एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. ये डेफिनेशन में हमने कवर किया था, इफ यू रिमेंबर दैट. बट ऑर्डर सेज इट मे और मे नॉट डिटरमाइन अ राइट, क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर किसी प्रकार के किए हो सकते हैं, जैसे स्टे ऑर्डर्स हो जाती हैं या किसी और प्रकार के ऑर्डर टू प्रोसीड इन अ मैनर, बट इट विल नॉट डिटरमाइन दैट इट इज़ द राइट ऑफ दैट पार्टी. नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट विच इज टाइप्स. डिग्री किस टाइप्स की हो सकती हैं? इट मे बी प्रिलिमिनरी और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. ओके, एंड द ऑर्डर सेज देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर. ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर एक ही प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट कम्स द नंबर्स. डिग्रीज, देयर कैन बी ओनली वन डिग्री एक्सेप्ट इन सर्टन सूट वेयर 2 डिग्रीज और प्रिलिमिनरी एंड फाइनल आर पास्ड. एक ही प्रकार की डिग्री होती है. ऑर्डर्स इन केस ऑफ अ सूट और अ प्रोसीडिंग्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में बी पास्ड. नेक्स्ट इज अपील्स. डिग्री में
Every degree is appealable unless otherwise express provided. A second appeal is also under 100 of CPC lies at High Court. लेकिन order कहता है what is the difference between a degree and order when the appeal comes. Every order is not appealable except order made under section 104 and order 43 rule 1. और सेकंड चीज़ इसमें यह है कि सेकंड अपील नहीं होती है. So before we wrap up the differences between degree and order, don't forget to mention that adjudication of a court may be either degree or order, but it cannot be both.
you